and principles to the policy education beginners. Today we are going to host a session education exchange program on understanding sustained education models of West Bengal and Delhi. So these are two states which exemplify certain achievements in themselves. So we have esteemed principals of Delhi government as well as private schools, and we also have some esteemed principals and educators of West Bengal government as well as private schools. So together we'll try to understand what are the latest changes that has been brought in both the respective states, and how post-COVID the schools are administering their curriculum, their education, and how the governments, respective governments, are implementing, bringing new policies so that we can learn from each other. Delhi is one of the best, states in terms of bringing innovation in school education. West Bengal is trying to cope up with the challenges that it is facing in terms of education, and also trying to bring some new policies uh, to better education in the state, public education. And as I introduce the esteemed panel, I will introduce speaker by speaker. As I mentioned, there are three rules. Let us not repeat the same point. Let us be to the point, and let us be brief so that we save time and we all can contribute together to make the discussion very healthy, outcome oriented, and fruitful. So to start the session, I have 3-4 veterans. As I see, Chandar Maiti sir is here, one of the educators leaders in the space. Kuldeep Singh sir joining us from Delhi, again a very our well wisher and a stall leader in the field of education from Delhi. Shamol sir, welcome and thank you so much, sir. You are always with us. And Shamsul sir, as a leader in this space of education, especially from North Bengal and also Eastern India. And we also have Kamakshi Joli ma'am, Sagarika ma'am, and other, and Shubhrata Kumar Burai sir, and Sarvendra Singh sir also joining us from Delhi. So with this, I will first request from one from Delhi, one from West Bengal, so that the discussion becomes mixed. So from since we will be talking about Delhi, so I'll start the discussion with Kuldeep sir. Kuldeep sir, kindly share the latest views. Kuldeep sir is a principal of GBSSS number 1 Adarsh Nagar, Delhi, and sir is in the space of education for decades now. Sir, what are the latest policy changes Delhi government has brought in? Please give us a historical perspective about Delhi government's education reforms policies. Thank you so much, and good evening to everyone and elite panelists. Basically, Delhi education has started from scratch in 2015. We got the school in very pathetic condition, and there was no infrastructure, and at the training part, the teachers and principals were lagging behind. So we started reforms in 2015. And for that, we invited the vision proposal from the principals. And there were 54 visions selected as a pilot school project. And in those pilot schools, the best infrastructure was provided, world-class infrastructure was provided, and the principal was sent to the foreign lands like Finland, Cambridge, and other places. And the teachers also were given the exposure of IIM Ahmedabad and different premier institutes on administrative as well as pedagogical issues. So basically, we started working on two aspects. First was the infrastructure, and second domain was building capability among the teaching staff, principals, and educators. And later, we could work on the issues which were pertaining to the society. The school started functioning for the need to fulfill the need of the society, and the vision was always shared.
The all stakeholders, including the politician, society member, local bodies, administrators, teachers, principals were called, and they just visualized that what type of the school they want to see after 5 years. So there was many good suggestions, and then the objectives were set, the annual objective and the long-term objective based upon the vision statement and vision. And after that, we started working on each aspect, each domain out of 7 domains of the school system. And you see that building the confidence and trust and belief system was premier thing for us. And to develop the attitude and discipline was another barrier for us. So we started working on infrastructure, as well as we started working on the soft skill of the pedagogy, that is to bring the understand different perspective of the different people, and to address the need of the society within the school system. So the incorporation of the social people through the SMC was strengthened. A school management committee was comprising the local people elected out of the students' parents, and then they were the main policy maker for the school. So in this way, all the issues which were pertaining to the society were addressed within the school context. And then we opened up to take care of other school systems like government boys senior secondary school, government girls senior secondary school, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, and now we have the specialized schools for excellence. Like for the STEM, we have different science and technology and mathematics, engineering. We have different SOSC. We have different SOSC to develop the military skills. We have different SOSC to develop the humanities. We have different SOSC to develop the United Nations value system. So the Delhi education is approaching towards the second phase of school transformation with the help of all stakeholders. And we are working not only on the infrastructure or developing the pedagogical skills of our staff, we are focusing on the student capabilities also. Recently, we launched one Project Voice program for the students, where our students are given topics and they deliver the instance sort of messages, group discussion, and they develop that vocabulary, they develop that confidence, they develop that particular collaborative approach to construct the knowledge. So this is the Project Voice we have launched. We have been running one leadership program to build the leadership among our school leaders, because we started one program, cluster leadership development program, in 2015. I could serve as a core facilitator for 4 years for that program between 2015 to 2019. And there we focused upon developing the leadership within the system rather than hiring the ideas from the outside. And then now we are running a special leadership program for the primary school leaders to develop their capabilities. Because in India, new education policy has been launched, and it is stressed upon 3 dimensions. First dimension is that primary education. Second is to develop value system among our citizens. And third is to develop the skills among our future citizens. So we have started this primary leadership program for our primary teachers. We are strengthening the student councils also in our schools to develop the leadership among the students. Because I firmly believe that till we do not have multiple leaders, till we do not have distributed leadership in any organization cannot develop towards the systemic understanding of the vision. Thank you very much. These are some of the initiatives which I discussed. We could take during 7-8 years, and still we are looking forward for any new suggestion, and we are very open to learn from everyone. Thank you. Thank you so much, Kuldeep sir.
wonderful points. I will now go back to or come to West Bengal. I will request Shamsul Alam sir, the principal of a very important Murariganj High School, Siliguri, Darjeeling, to share your views on on highlighting some of the policies that West Bengal government has taken, and also some of the practices that you are practicing at your school. Uh, Actually, just as sir told about Delhi, actually we are not like Delhi. Just we are following the education policy of Delhi. Actually, my school is in the village. It is 40 kilometers away from a small city, Shiliguri. Actually, where we have the bus service, and actually PTR, people teacher ratio in West Bengal is very high. That is very problem. And the government is giving fund and giving training for headmasters training like the SLDP program. But our main problem is the PTR. It is too much high, and the infrastructure also. Actually, nowadays we are not getting the students also. It is our problem. They are moving from government school to private school, especially in the city. In the village area, actually, our main competitor is the private sector. So my approach will be here. If we the interested a few headmasters from Siliguri and the West Bengal, rest of the part of the West Bengal, they are highly interested to visit the Delhi government school, their policy and their infrastructure. It is just sir told their class is world class, but we are every day we are facing a problem, infrastructure, people teacher ratio, everything. Nowadays, government is providing the training so that they can give the best education, and the main competitor is the private sector. Actually, mentally we are lagging, but our school especially, it is in the district of Darjeeling, near 40 kilometers away from Siliguri. But we are just taking some steps like the private school. So our infrastructure, just we are getting money from the CSR. Our infrastructure is like the private school, but if you see the other part of the Bengal, other schools, it is not like that. So we have to emphasize more for infrastructure and the training for all stakeholder also, like the head of the institution, like the teacher, parents also, so that we can be like the government school of Delhi also. This is all about, and my request, if delegation from West Bengal, at least 20 to 30 delegations, if government of Delhi education department allow us to visit their infrastructure, the policy which they are adapting at this moment, so it will be help for us so that we can implement here also. And Mr. Vijay Shah is here. He will say something. He has the more opinion about the government school. He's the only person that I've seen that he always is advocating in favor of the government school. So this is all about my views. Being a head of the institution, I have the experience of near about 15 years, but we are facing the problem, that is the PTR problem and the infrastructure also. That's all. Namaskar, everyone present in the meeting. Namaskar, sir. Good evening, sir. Good evening. So we are very honored कि हमारे साथ विजय कुमार शाह सर ज्वाइन किए हैं, एक सोशल रिफॉर्मर, एक एडुकेशनिस्ट और एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन, philanthropist from Siliguri, Darjeeling, and sir is also founder of Darjeeling Public School, DPS, one of the premium education institutions of North Bengal. मैं विजय कुमार शाह सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बहुत एडुकेशन में एक्सपर्ट भी हैं और साथ में विजनरी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे विजनरी कॉन्सेप्ट्स हैं सर के, और बंगाल एजुकेशन रिफॉर्म्स में सर बहुत कुछ कोशिश भी कर रहे हैं करने की.
तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपके हिसाब से अभी जो करंट एग्जिस्टिंग हमारे बंगाल में एजुकेशन पॉलिसी, खास करके कोरोना के बाद, किस तरह से एजुकेशन रिफॉर्म्स आप चेंजेस आपने देखा? और एक तो कोरोना जो बीत गया, और अभी चाइना में एक दिन में 35 लाख कोरोना केसेस आने की खबर आ रही है और 5 लाख डेथ की न्यूज आ रही है, जो मुझे लगता है ये विंटर में, अगले 2-3 महीने में, जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडिया के अथॉरिटीज डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में फिर से कोरोना का प्रकोप आने वाला है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस तरह से फंक्शन करेगी इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आने वाले, और आपकी क्या सुझाव रहेगा सर हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए? मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा कि मैं मीटिंग में काफी देर से जुड़ा। सभी को मेरा नमस्कार। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मेरे हिसाब से सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन में, उन सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। एम आई ऑडिबल? मैं सब सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर, यस सर। हाँ, तो उन सबको, हम सभी लोगों को ईमानदारी के साथ में और पारदर्शिता के साथ में हम सभी लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स के साथ और समाज के साथ। किंतु जो वर्तमान की परिस्थिति है, चाहे हम देश के किसी भी स्टेट को देखें, तो यह स्थिति बिल्कुल उलट है। जहां एक तरफ गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जहां पर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनके स्कूल्स बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, किंतु वहीं पर काफी जगहों में अकाउंटेबिलिटी का अभाव दिखता है। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर के भी हालात हैं। मेरे हिसाब से एजुकेशन में जो अब समय आया है, इस समय में एजुकेशन का लिबरलाइजेशन होना चाहिए। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वो सारे स्कूल इंडिपेंडेंट स्कूल होना चाहिए। और सरकार को स्कूल को नहीं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और सभी स्कूलों के बीच में एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। यह काम छोटा नहीं है, किंतु इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और जब ये रिफॉर्म्स आने शुरू होंगे, तो हमारे एजुकेशन में भी वैसी ही तरक्की होगी जैसी तरक्की हमारे देश में सिविल एविएशन में हुई है, दूर संचार में हुई है, बैंकिंग में हुई है, और हेल्थ के सेक्टर में भी काफी उन्नति इस तरह से हुई है। उससे क्या होगा? उससे शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित निवेश भी आएगा, और हमारे जो टीचर्स हैं, जो कि एजुकेशन के सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं, उनको स्वतंत्रता मिलेगी। वो भी अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से इसमें यथोचित योगदान दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो एजुकेशन की स्थिति है, विशेषकर स्कूल एजुकेशन, वह थोड़ी स्टीरियोफोनिक हो गई। उसमें नवाचार तभी आएगा जब टीचर्स को स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही साथ स्कूलों को भी स्वायत्तता मिलेगी, और सभी स्कूल अपने अपने ढंग से शिक्षा में योगदान दे पाएंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक नैरेटिव है कि सरकारी स्कूल या सरकार सपोर्टेड स्कूल जो है, एडेड स्कूल जो है, वह सस्ते हैं। जबकि एक आंकलन के अनुसार
हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वो कमोबेश सरकारी स्कूलों में एक बच्चे के पीछे 6,000 से ज्यादा रुपए प्रति माह खर्च करते हैं। ये राशि ज्यादा हो कोई बात नहीं है, कम हो कोई बात नहीं है, किंतु इसकी अकाउंटेबिलिटी समाज को देखने को नहीं मिल रही है। और इसी वजह से जो हमारा आज की स्थिति है, करीब 50% बच्चे सरकारी स्कूलों की मुफ्त शिक्षा को छोड़कर और पैसे दे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें लिबरलाइजेशन जब आएगा तो अब सरकारी स्कूल भी अच्छे होंगे, वहां के जो शिक्षाविद हैं उनको आजादी मिलेगी, वो अपने ढंग से अपने स्कूलों को चला पाएंगे। उसके उदाहरण इसी मीटिंग में है। हमारे शमसुल आलम सर हैं। मैं दायित्व के साथ कहता हूं कि जहां हमारे बंगाल में ज्यादातर सरकारी स्कूलों की अवस्था थोड़ी बुरी है या कम है, मतलब अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वहां सर का स्कूल जो है वह प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे स्कूल, सारे सरकारी स्कूल ऐसे बने, सब प्राइवेट स्कूल ऐसे बने और उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी तो स्वाभाविक बन जाएगा। ये मेरा कहना है। दूसरा एक आंकलन और कहना चाहता हूं, हमारे देश में 98% से भी ज्यादा सरकारी स्कूल इतने खर्च करने के बाद में भी आरटीई के प्रोविजंस के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल करते हैं। इसलिए अब समय है कि हम सरकारी और बेसरकारी सभी स्कूल हाथ से हाथ मिलाकर और एक दूसरे का सहयोग कर और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाएं। दिल्ली में जो स्कूल्स में परिवर्तन आया है वह काबिले तारीफ है, किंतु हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सरकारें बदलती रहती हैं और एक सरकार आती है वो अपने ढंग से काम करती है, दूसरी सरकार आती है वो अपने ढंग से काम करती है। तो जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को हम राजनीति से एकदम अलग कर दें और सभी स्कूलों को स्वायत्तता दे दें, लिबरलाइज कर दें। ये प्राइवेटाइजेशन शब्द जो है शिक्षा में आना ही नहीं चाहिए। एक ही शब्द होना चाहिए दोनों सेक्टर के लिए, चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, वो होना चाहिए, शब्द होना चाहिए लिबरलाइजेशन। शिक्षा को आजादी दे दीजिए तो शिक्षा अपने आप अपने को संभाल लेगी। धन्यवाद। एक्चुअली थैंक यू सो मच सर। मैं हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं गौरवड़ी खाना सर को थोड़ा समझा रहा था कि कैसे जूम ज्वाइन करना है, बट वो उनको टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन। अभी मैं हमारे कामाक्षी जोली मैम है दिल्ली में आएंगे। फिर कामाक्षी जोली मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैम कुछ पॉइंट्स आप दिल्ली के बारे में, दिल्ली स्कूल्स और दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कुछ शेयर करें। Hello, Mr. Akram. Hello, everyone. Actually, मैं इतना can all of you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. मैंने जो बात सुनी, what I heard from Mr. Murari, very well said. I'm just mesmerized by what he said. In very simple words, he said it. Liberalization should be there. Yes, and not whatever he says, the privatization. This is a very good word to say. And all of us are well aware that too much interference is not good and too much privatization is also not good. The thing is that we should all be doing the same, as they are all saying. Kuldeep sir also said it very well. Now, what I would like to say is that nutritionally also our children are deficient. Body mass index is being calculated right now in our schools. So, because children, they have not been deficient nutritionally for one generation. This has been going on for several generations. So we are also
thinking of providing them with snacks, or they should bring their own snacks. So if they are feeling hungry before the lunch is being provided to them, so they should be able to eat that, but that snack should be healthy. Like we used to eat lots of raw veggies or peanuts or patties or fruits, but these days children bring packed snacks, namkeens and chocolates and things like that, which are pre-packed long ago, and they're not very healthy. Some are full of pesticides. So this is a new initiative. Then integrating genders, that is another thing. And ultimately, we don't want to have a separate school for girls and boys, but we want them to integrate. uh, the evening shift and the morning shift should be integrated into one. As far as integration goes, there's another kind of integration going on, and that is inclusiveness of education, wherein all the learners with different stages of learning, they should be sitting together, helping each other, and integrating as a part of social milieu, not separately. Like we used to have blind schools, hearing impaired schools. Now they are all being integrated under special education, um, compulsory special educator in every school. So that all are able to integrate into society better. And the children, so-called normal children, should be able to integrate well with them. They should be their friends instead of calling them the other type of people. You know, these kinds of things are going on. Then, principal as a facilitator, we should be facilitating them, the teachers, the students, or everyone, the stakeholders. Another thing which will happen probably next year, and right now the process is going on, is vocationalization of education. As you know, education should be means to getting a job as well. If I right now don't have a better word for it. So that is being emphasized. So we are having various subjects in ninth itself, wherein a seventh subject, like vocational studies, is being introduced. Whether it is beauty and wellness, fashion designing, or whether it is some other subjects, mechanics of the very rudimentary kinds. Later on, they become more and more developed as the child goes to next class. So vocationalization is another field that I think is a very good step, which we have taken from NEP 2020. So that is also going on, introducing some love for the nature. So there is National Green Tribunal. So planting trees, asking children to plant trees, bring their own saplings, because Delhi, as you know, is facing loads of pollution, especially during winter. And children, they are facing asthma and other kinds of breathing problems. So to inculcate love for the nature, we are also planting more trees. And now that the schools have opened after so many years, like properly opened, so we are also organizing picnics and tours to science museum, zoo, so that they can experience more and more of science, nature, and other things like that. um, uh, Mission Bunyad, so that the gaps in learning from for the last 2 years, they will be bridged. They are being bridged. Children were taught even during the summer holidays and all the other holidays. They came to school, and from level one they reached the level two, and now they are appearing in class ninth exams. So that is going on. So that's a very good thing. Another thing which I liked very much is CUET preparedness, because Delhi, has three major central universities: JNU, DU, and Jamia. So preparing for Central University entrance test. So we are having extra coaching classes. That is another thing, and counseling the children for that. And right now I'm writing a mail to chartered accountants
person who will come and give a talk in our school to the future chartered accountants, to the future accountants from class 9th till 12th, to the children who are, all of the children who are interested in several batches. So that is the plan. Plan is a long-term plan. Those who want to opt for vocational, they can go for vocational. Those who want to opt for the traditional CA, MBA, that route, so for them, we are organizing a different counseling session. People who have opted for beautician and other wellness courses, they can also come and join. So that is kind of fluidity, which I like very much. Health and well-being, mental health issues, and physical health issues are being addressed to. Even the parents will be called, and they will also be consulted as to what food is good, what should be prepared, and encourage children and themselves to eat right so that they remain fit. So this is how we are having a more inclusive, more participatory educational system in our Delhi model. And that's all I have to say for it. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words and also for being very brief. I'll move ahead and I'll request actually on phone. Okay. Yeah, I have on phone Sri Gaurhari Khana sir. Khana sir is the former Chief Executive Officer of School Entrepreneurship and Training Division of ATI, and Khana sir has trained thousands of school principals, school teachers during his tenure, during his career, and now Khana sir is running a very successfully a Prantojan, a magazine, online magazine, Bengali magazine, which is doing outstanding work in the field of education and also social awareness. I will request Khana sir is on phone with us, so we will have the opportunity to hear him over message. So I'll request Khana sir to kindly share your view on the education reforms or education changes that you have seen, sir. Welcome, all are welcome, and good evening to all. Due to technical problem, I could not join you on video conference, but I just I have heard your message, and now I'm telling that due to we have to upgrade the standard of the education in West Bengal. The standard of education in West Bengal is very, very inferior. The standard is unless we upgrade the same, our future will be darkened. So, first and foremost duty of the education is to enlighten the people and their teachers to come with policy time to keep their standard of education, quality education. We are lacking of some school quality education that is to be rectified first. Unless we rectify the quality of education, we will not be, our future will be done. So, first and foremost thing is to upgrade the quality of education. That is the question, how we can do that. And through seminar, we can invite so many opinions also, and we can visit other schools, other states where the education, the quality of education is better. We can do that also. So we can think that we will do nothing during this period. Our future will be that way. So we invite all the persons, all the persons who love education to come forward and take responsibility to upgrade the standard of education, quality education. We need quality education, as well as the standard ethics, ethics of the teachers, ethics of the students, ethics of the institutional, all the institutes. So we should focus on the quality education and
values and ethics. Okay, I am telling this much, and I will again tell after hearing from you. Thank you. Thank you so much, sir, for being again brief and sharing two important points. One is value, moral, ethical education. That is actually a need of the hour now, because we are education has become so mechanic. We are just trying to teach people anything so that they can earn money. But moral education, imagine, I have been telling this to a lot of school principals and a lot of students also. If your student cheats to give the exam or during exam, what kind of education are we giving them? If they do the basic quality of cheating, like writing, copying, pasting, all this work, so that shows that how poor kind of moral and ethical education we are doing or we are giving to them. So first we have to ensure that the very basic moral education. Sir, second point sir emphasized was quality and standard of education. I'll move forward. I will request another education activist, I would rather say, and introduce Chandan Maiti sir. As Chandra Maiti sir has been activisting, the reforms or the changes that we need in this space of education. Sir, your opinion and view on how, where Bengal education stand today, and where it should be and how. Please unmute, sir. Good evening, everybody. Thank you, Policy Times, for taking such a contemporary point, which is being discussed today in the evening, and always you do that. And I once again congratulate you all, your team. And here are some speakers who said well, and I welcome their views. You are telling today, just now, that the cheating, copying to pass the examination. What happened, you see, only 2 weeks back, there is a school named Jalpaiguri Sodar Girls High School. The name of the principal is Sutapada, Mrs. Sutapadas. You see, a class 8 girl student, she was cheating, that is, copying something from a note. And the concerned invigilator madam noticed it and brought her to the principal, and principal called her guardian. Guardian came. Principal repeatedly requested guardian to convince the girl not to do the same thing again. And ultimately, the girl went to her home and committed suicide. And as a result, her father, lodged a complaint, FIR, to the police station, saying that, accusing the lady teacher, the invigilator, and the principal, and the police OC concerned, lodged the complaint on the take it as a FIR, and you'll see 305 charged against them. That means abetting that something punishable, and she is going to be arrested. And in such a condition, how can you go for? And the students are so, you see, the teachers must say something that you don't do this, don't do this. The guardians will definitely counsel, and we have limited scope because the what kind of crowded classrooms. You see, education for all, that is Samagra Shiksha Abhijan going on, and we cannot restrict. But due to post-corona pandemic, during this post-corona pandemic, what happened? We noticed it in our Bengal scenario.
20 to 30% dropped out are there. 20 to 30%. This is alarming. And what happens, on an average, 60 to 70% did not do well in the examination. And you see that government is trying their level best to give some scholarships, like Karnasri, you see 25,000 at a time. We never imagined it. And you see the government is giving so many scholarships like Oikkasri for the minority students. And there is, you see, Sikhasri for the ST, SC, ST, OBC students. And there is bicycle they're giving to encourage the students. And government is trying their level best to give some other, you see, facilities like tab, 10,000. But what is happening nowadays in Bengal? You see, whenever compared to Delhi education policy, I don't know whether Delhi government is giving such facilities to the students. We could not imagine while we are students. But only national scholarships or somewhat like that were given for few students only. Very few students, brilliant students would get. Now, the zero merited students can get all these facilities. So there is no division. It's a good step taken by the government of West Bengal. At the same time, there is the green picture. What is happening? I see Samsul sir was telling it that the pupil-teacher ratio is so low because for last near about 8 years or some in madrasa, no recruitment. Last recruitment was taken place in 2012, and last 10 years no recruitment for teaching and non-teaching. What is happening there? Teachers are taking retirement, superannuated retirement, and the students are coming in. You see, there is a Arjunpur High School named Arjunpur High School in Murshidabad near Farakka. You see, there are 9,000 students, having only 66 teachers, 9,000 students. You see, and due to Utsosri scheme is a very good scheme for transfer of teachers, and they took advantage of this, and the court is not favoring, the High Court also gave some instructions to the principal that if you don't allow the if you don't allow the teachers, you will be punished. And they punished them. As a result, exodus, teachers are going to the urban areas, and in rural areas, rural Bengal. In rural Bengal, what happens? Teacherless schools are there. Some 2, 3, 4 teachers, they are taking classes. Out of, you see, 2,000, 3,000, 2,500 students are there. More than 1,000 students are there in rural areas, rural Bengal. And in urban areas like Kolkata and Savannah areas, what happens? You see, there are some schools, I can mention the name, the Bongo Shishu Vidyalaya near Sialda in Kolkata. The Bongo Shishu Vidyalaya, there are no students. There is no student, but there are 18 teachers. 12 teachers were there, but due to Utsosri, a transfer scheme of the government of West Bengal, 6 more teachers joined there. And you see Azadgarh Vidyapith in South Kolkata. What happens there? Actually no students are there. And near about 14 teachers are there, existing teachers, including the principal. And in rural Bengal, what happens, more painful that is that science teachers are not there. As a result, the students cannot read science because no science, private tutors are not there. So where they will go? There are some subjects taught in higher secondary having no teacher.
The higher secondary council is issuing some subjects, very contemporary subjects, very important subjects, but the school education department is not sanctioning any post. And you know, you had already experienced, you had already seen and heard that there is recruitment, teaching and non-teaching staff recruitment scam in Bengal. You see so many government officials also arrested and sent to jail. And we are the worst sufferers with the school principals. We cannot recruit as our own. One, Bijoy Shah, most probably, he told that liberalization is to be done because there should be no control at all. It should be welcome. But what is happening? We have government-aided schools. We have government-aided schools near about 12,500. And all these schools were converted to government-sponsored schools. In Delhi, only the government schools are there. No government-aided, no government-sponsored. There are two types of schools, government schools and private schools. In our West Bengal, there are so many types of schools, like private school, government-aided school, government-sponsored schools, government schools. But we are converted to government-sponsored schools. And government-sponsored schools, you see, there are some, managing committee members who are not actually, the government had given some instructions that they must be graduate, some of them. But there are so many places, they are not the graduates, and some are coming from political background. And the school is captured by the schools are captured by them. And as a result, no innovative ideas are being, cultivated. And that's why we cannot go forward. And there is a huge hindrance. And for training purpose, teachers are not trained. During that period of time, in 2000, the first decade and second decade, 10, 20s, and sometimes. Sir, please unmute. Yeah. Yeah. Can you listen? Could you listen me? Yeah, we can hear you, sir. Okay. There's a curriculum. That's no updated curriculum. And those people are sitting all over the year under the leadership of a chairman or someone like that. So many members are there. They are not rectifying themselves. And we are trying that this curriculum cannot fulfill the purpose of the students and the guardian. In rural areas, what happens? There is no scope of private schools. For the primary school, there is a private school, nursery school, etc. They are opting for that. But for the secondary and higher secondary level, college level, there is no scope. And that's why almost all the students come to our secondary and higher secondary schools. There is no actually private school in rural-based areas. And not even having no teachers at all. And you see the exam-related syllabus, only the exam-related syllabus. And board council, West Bengal board, West Bengal council, all these are, all these have to supervise the present academic scenario of Bengal. But they are not doing anything for the academic development. There are some departments like district inspector of schools and the director of schools. What they are doing actually all these government schemes, policies, where for giving relief, dole, scholarship, bicycle, tab, school uniform, books, etc. They are dealing with this only. They are taking some some reports on these issues. But you see, the educational institution, they must impart some quality education, value education. What Mr. Khara, our respected Khara, told it, but that is not being done. And one of our, you see, Mr. Saha said, actually,
Vijay Kumar Shah, what he said, accountability. You see, all throughout the year, what a teacher does cannot be assessed. Cannot be assessed. You see, you are giving salary, you are giving infrastructure, you are giving everything. Why don't you take the you see the feedback from the teachers regarding the academic development of a student, the quality education of a quality education? You must emphasize, and that is not being done, and that's a big, huge problem we are facing here. You see, you are the first speaker. You see, he told me, the principal, Kuldeep sir. Kuldeep sir told that the world class, they are going abroad to see the scenario like Japan and other countries, and there is no such exchange program from the part of the government. There is no elected body, controlling the board of secondary education or the council. Totally bureaucratic system is going on. And as a result, we are the worst sufferers, students of the worst sufferers. We are not happy, sir. And what he said, that the vocational education, Mrs. Jolly Madam told it, that the vocational training, we are also doing vocational training, but no recruitment of teachers in place of the teachers retired. And there is no laboratory, no workshop, nothing. And everything is going out. And our Tagore said, পুষ্প বিহীন পূজা আয়োজন ভক্তি বিহীনতা একেবারে ফুল ছাড়া যদি পূজা হয় ভক্তি ছাড়া তান গাওয়া হয় ঠিক সেই সুরটা হয় যদিও it rings very bad that I am criticizing the government, but we are the grassroots, we are doing in a grassroots level for the students, and we face all these problems. Thank you very much for what you said. Yeah, so now may I moving ahead, may I now request हमारे साथ है मुरसलीन सर। मुरसलीन सर हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशन एंटरप्रेन्योर हैं, लीडर हैं। इल्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं हावड़ा में, और बहुत गांव से, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। जो मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे थे हम, क्या मुरसलीन सर आप ऑनलाइन हैं? क्या आप बात कर सकते हैं? जी, और कैमरा के साथ अगर आ सकते हैं बहुत अच्छा। और जब तक मुरसलीन सर आ रहे हैं तब तक मैं विजय सर का एक कमेंट बॉक्स से ले लूं। सर का कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को किताब के रिसाइकलिंग को प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि हंड्रेड्स और हजारों किताब जो सरकारी स्कूल पे निकलते हैं हर साल, अगर उसको रीयूज और रिसाइकिल किया जाए तो वी कैन सेव लॉट ऑफ पेपर्स, और हम बहुत सारे पेड़ को बचा सकते हैं। और पेरेंट काउंसलिंग, एसेंट स्कूल से जो हमारे प्रिंसिपल होंगे, उन्होंने बोला कि पेरेंट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो माइती सर का पॉइंट था। अब मैं आऊंगा मुरसलीन सर से। सर, कुछ पॉइंट्स आपके तरफ से कि एजुकेशन के बारे में और रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहना होगा आपको? मुरसलीन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद मुरसलीन सर अभी वीडियो में आए थे लेकिन शायद नहीं सुन पा रहे। फिर मैं जाऊंगा, अभी दिल्ली में आ जाएंगे। फिर दिल्ली में हमारे साथ डॉक्टर सर्वेंद्र सर हैं। सर्वेंद्र सर, अनम्यूट करके कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से दिल्ली कॉन्टेक्स्ट में। सर्वेंद्र सर या मुरसलीन सर, आप दोनों में से कोई अगर ऑनलाइन है? अच्छा, अगर सर्वेंद्र सर नहीं है तो एसेंट स्कूल से हमारे जो हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कुछ शेयर कर सकते। मुरसलीन सर, आप सुन पा रहे हैं? Yes sir. Am I audible? हाँ। बट मैं मुरसलीन सर आए हैं वापस, अगर आप सुन पा रहे हैं सर कुछ बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
नहीं सर, आपका वॉइस ना नहीं आ रहा है। जी, मुझे लगता है आपका ऑडियो एक बार वो रिकनेक्ट कीजिए, फिर मैं एसेंट स्कूल में आऊंगा। सर आप थोड़ा सा अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन देखिए प्लीज, कुछ पॉइंट्स एजुकेशन के बारे में बताइए। जी May I talk now? जी प्लीज प्लीज। Okay, thank you, sir. I'm MD Shahidul Islam from Ascend English School. ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं पिछले लगभग 25 साल। जो वेस्ट बंगाल में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो मिशनरी एजुकेशन सिस्टम, कहीं स्टूडेंट के हिसाब से, कहीं टीचर, कहीं ऑर्गेनाइजर की। तो जो मुझे लगा, एक पॉइंट हम मैसेज में भेजे कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे वेस्ट बंगाल का जो रूरल एरिया है, वहाँ का वहाँ पे गुड पेरेंटिंग प्रोग्राम एक होना चाहिए। जो हम मेरा स्कूल जो एशियन इंग्लिश स्कूल है, वहाँ के एक मेरा प्रोग्राम में है अभी, एक बनाएंगे एक गुड पेरेंटिंग प्रोग्राम। और एक है स्कूल मैनेजमेंट, अगर कोई प्रोग्राम होगा, हम जैसे जो लोग स्कूल चलाते हैं या प्रिंसिपल्स जो हैं, उनको लेकर अगर कोई अच्छा प्रोग्राम हो, मतलब उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हो सके। दिल्ली से जो स्पीकर्स हैं, हम उनको सुने, बहुत अच्छा लगा उनका एक्सपीरियंस। थोड़ा हम अगर मिले उन लोग का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के माध्यम से, तो हम लोग के लिए बेहतर होगा स्कूल चलाने में। और एजुकेशन सिस्टम जो है, काफ़ी हम सुने, सर शामसुल आलम सर को हम जानते हैं, वो एक बहुत अच्छे स्कूल चलाते हैं। तो ऐसा लोगों से अगर हम लोग को ट्रेनिंग मिले, तो कुछ अच्छा कर सके हम एजुकेशन सिस्टम में। बस बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है जी। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम बहुत सारे इंस्पिरेशन ले सकते क्या अभी। हाँ सर का হ্যালো जी जी मुसलिन सर। হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা, হিন্দিতে। good evening all of you. I'm very much sorry to say that I'm late because of my some political schedule. I was busy. तो हम आप लोग से माफी भी मांगते हैं क्योंकि हमारा कुछ पॉलिटिकल शेड्यूल्स था, उसलिए हम बिजी थे। आज फिर भी हम लेट से आया, तो कुछ बात हमारे जो स्पीकर्स के हमने सुने हैं, सुनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम अगर 18 माने 1832 साल का वो लॉर्ड मैकॉली ने जो रिपोर्ट दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम वो पहले थे, तो अगर ये एजुकेशन सिस्टम रहे तो वो इंडिया को कॉन्कर नहीं कर सकते। तो उन्होंने रेमेडी बोला था, वी हैव टू चेंज देयर एंशिएंट स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज देयर बैकबोन। तो आज हमें हमारी वो एंशिएंट स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम को हम सोचते हैं एजुकेशन सिस्टम में वापस लाना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज जो है, हमारी जो तहजीब है, और ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन में लाना चाहिए। हम 2 दिन आगे सरद सदन में एक सेंट जोसेफ बोल के एक स्कूल का मैंने एनुअल फंक्शन में गए थे। तो वहां जाके हम देख रहा क्लास 10 का बच्चा और बच्ची मिलकर एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस कर रहा। तो ये देखकर हम तो खुद पर हम बहुत ताजुब हो गया, what this education institutions are doing, they are spoiling the life of our child. तो हम चाहते हैं, हम लोग का हमारा ये मनसा भी है कि देखिए, दिल्ली हो या वेस्ट बंगाल हो, जो सरकार जो कर रहा है बहुत बेहतरीन काम कर रहा, लेकिन आज हमारी जो पेरेंट्स है और हमारे जो टीचर्स है, हम सोचते हैं पहला हमें हमारी पेरेंट्स की काउंसलिंग करना चाहिए, टीचरों को भी काउंसलिंग करना चाहिए कि आज हम टीचर और पेरेंट्स बोथ ओनली वी वांट द बिहेवियर्स ऑफ आवर चाइल्ड। तो हाउ कैन यू चेंज योर चिल्ड्रंस बिहेवियर्स if there is no incident, if there is no emotional attachment, if there is no growth of belief system, then we cannot change the behaviors. तो इसलिए जो भी स्टेट का एजुकेशन, हम किसी स्टेट का संग किसी स्टेट का कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी पहले जो सर ने बोला, बहुत सा ग्रांट्स स्कॉलरशिप
हमारा सरकार जो वेस्ट बंगाल की जो दीदी का सरकार ममता बनर्जी की सरकार जो है हर वर्ग के स्टूडेंट को दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने ये नोटिस किया है पेरेंट्स लोग ग्रांट्स लेने के लिए सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन बच्चा की पढ़ाई व्हाट दे विल लर्न ये फिक्र नहीं है, क्योंकि इसको आसानी से कुछ पैसा या कुछ स्कॉलरशिप मिल जा रहा बोल के। तो हम सोचते हैं जो भी हम लोग एजुकेशन लेके काम करते हैं, हमें ये सरकार या कोई निजाम या सिस्टम को नहीं सोच के हमें चाहिए कि हमारी पूरी कम्युनिटी को, हमारी जो जहां है, जिस फील्ड में काम कर रहा, तो इंसान की सोच, ये सोच को परिवर्तन करने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम की जो जरूरत है, जैसे हमको ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए, उसी लिए अच्छा इंसान बनने के लिए जो हमारी एजुकेशन की जरूरत है, जो हमारे कुरान में भी बोला गया इक़रा बिस्मिका रब्बुकल्लज़ी खलक, पढ़ाई हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसका हमें लगता है हमारा कुछ प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए गांव में जाकर, शहर में जाकर, जो आवाम के पास कि एजुकेशन होना चाहिए और एजुकेशन का सिस्टम विद मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। आजकल का बच्चा जो जिस तरफ जा रहे हैं, हमें तो लग रहा है इसमें हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में हमने कुछ चीज ऐसा चीज हमने जोड़ दिया है जो एजुकेशन का दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एजुकेशन। आज ज्यादातर इंग्लिश प्राइवेट स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होते हैं, आप लोग अगर उसमें जाएंगे तो देखिएगा सोशल एक्टिविटीज से ज्यादा ये लोग आजकल म्यूजिक, डांस, गाना में इतना मस्त हो गया कि आज बच्चा खुद से कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है ये नहीं दिखाई देता। इसलिए हमारी ये सोच है जो दिल्ली की जो अच्छा ही चीज बना है, हमारी बंगाल में भी बहुत चीज अच्छा है, तो हमारे कोलैबोरेशन होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली का हम लेंगे और हमारा सब खराब है ये बोलना गलत है। हमारा अंदर में जैसा हम हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद में बहुत बार हम लोग हमारे टीचर लोग को लेकर ट्रेनिंग कर चुके हैं, वहाँ की भी बहुत चीज अच्छे है, हमने बहुत अच्छा चीज वहां से मिला है हमें। जैसे समाज से समाज जलाना, जैसा हमारे वेस्ट बंगाल में अनएड स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, एक स्कूल अपना खूबी दूसरा स्कूल को नहीं बताना चाहते हैं, ये बहुत गलत हो रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा आना चाहिए, हमारा अंदर में जो हमारा जो बच्चा अच्छा हो रहा, क्यों अच्छा हो रहा वो दूसरा को बोलना, दूसरा स्कूल का अच्छाई को हम लेना। अगर हम लोग शेयरिंग करके और केयरिंग करके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पूरी बंगाल की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, वो सरकारी हो या बेसरकारी हो, अगर हम हाथ से हाथ मिलाकर समाज से समाज जलाएंगे तो बंगाल की एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन होगा। ऐसी तो हमारा दीदी ममता बनर्जी जो हमारी सीएम है, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है बंगाल की, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम जितने भी सोशल वर्कर है, एडुकेटर है, जो हम लोग एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं, हमें चाहिए स्लम एरिया में ज्यादा काम करना, क्योंकि स्लम एरिया के बच्चों को अगर हम एडुकेटेड नहीं बनाएंगे, देखिए जो पैसा वाला है वो कोई ना कोई बड़ा स्कूल में जाके उसका बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, कि कुछ गरीब इंसान ऐसा स्लम एरिया की है जहाँ कुछ गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ प्राइवेट सेक्शन में, प्राइमरी सेक्शन में शायद पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मिड डे मील का खाना या कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, बल्कि वो बच्चे लोग सिर्फ वहाँ नाम लिखा के और पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा। तो हम लोग अगर सोचे स्लम एरिया में जाके अच्छा से अच्छा तालीम अगर हमारी बंगाल की पूरा 100% आवाम का तक पहुंचा सके तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बट वी हैव टू वर्क। पहले जो सर बोला था वी मस्ट लिबरल, हमें लिबरली काम करना चाहिए। कोई स्कूल बेहतरीन नहीं है, हम सब मिलकर बेहतरीन बनेंगे। हमारा स्कूल बेस्ट बनेगा और दूसरा का स्कूल वर्स्ट बन जाएगा, ये सोच के नहीं चलेंगे। हमारा स्कूल बेस्ट बना है जो कारण से दूसरा का स्कूल को वो शेयर करेंगे, और सब स्कूल मिलके अगर हम लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेसफुल इन आवर एजुकेशन सिस्टम। और हम अकरम भाई की दिल से बहुत बधाई देते हैं और उनका शुक्र गुजार हूँ जो उन्होंने लड़का है, और खास करके हमारे हावड़ा की जो आलमीन इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट है, इसलिए उनका दिल
हम लोग सबको मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह खाली दिल्ली नहीं, बंगाल में भी बहुत चीज है हमारी अच्छा ही चीज है, वो दिल्ली को हम लोग दिखाए और दिल्ली की जो अच्छा है हम लाएंगे, तो दिल्ली बंगाल दोनों ही बेस्ट बनेंगे इंशाल्लाह। यही बोलते हुए आज हमारी बात यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मुसलिन भाई, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने शेयर किया। और इनफैक्ट इसी बात पे एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर ने कहा था कि जो ज्ञान जो होता है, शिक्षा बोलिए या ज्ञान, वो दुनिया का सबसे बड़ा संपद है, यानी दौलत है। यानी हम अक्सर क्या समझते हैं कि जमीन खरीदना सबसे बड़ा दौलत है, जमीन बहुत बड़ा दौलत है, उसके बाद पैसा दौलत माना जाता है। लेकिन आप अक्सर गांव में या शहर में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां एक आदमी बहुत पैसा वाला बड़ा आदमी होता है, लेकिन एक दूसरा आदमी सिर्फ ज्ञान से भरपूर होता है। लेकिन जो गांव में इज्जत मिलती है उस गरीब लेकिन जो ज्ञानी आदमी है उसको मिलता है, जो सम्मान देते हैं गांव के लोग। और पैसा वाला आदमी को गाली ही देते हैं पीछे, लेकिन सब पैसा वाला आदमी जैसा बनना चाहता है, उसके जैसा गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके जैसा बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहता है। लेकिन जब रेस्पेक्ट देने की बात आती है तो वो सबसे ज्यादा हकीकत है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर ने कहा था कि ये जो कम्युनिटी है, और ये तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारी बिरादरी खत्म हो जाएगी अगर तुमने ज्ञान नहीं लिया। तो आज हम ये मैसेज अगर दे पाए कि लेट अस एडुकेट एंड लेट अस टेक एडुकेशन, तो समाज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएगा। ना कि ये प्रमोट करते कि चलो आप जब 5 फ्लोर वाला बिल्डिंग बनाया तो अगला वाला बिल्डिंग 8 फ्लोर वाला मैं बनाऊंगा। ये कंपटीशन से ज्यादा अगर हम नॉलेज की कंपटीशन करें तो बेहतर समाज बन सकता है। अभी मैं आगे बढ़ते हुए श्यामल सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपका कुछ पॉइंट्स और व्यूज प्लीज शेयर विद अस। श्यामल सर अगर आप ऑनलाइन में हैं, श्यामल सर इफ यू आर देयर, श्यामल मुजिंदर सर हमारे एक बहुत ही एजुकेशन लीडर हैं और प्रिंसिपल हैं। मुझे लगता है श्यामल सर थोड़ा सा ब्रेक में गए हैं। फिर मैं आगे बढ़ते हुए रोहित मुखर्जी सर को रिक्वेस्ट करूंगा आपकी तरफ से अगर कुछ पॉइंट्स हैं। नहीं तो रोहित सर, सागरिका मैम अगर आप हैं, सागरिका चैटर्जी मैम, I will request you to kindly share your views. सागरिका मैम है, सुब्रतो सर, हेलो हेलो सागरिका मैम प्लीज, सुब्रतो सर। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली हम लोग एक एनजीओ के तरफ से है, एक एनजीओ रन कर रहे हैं जो कि लक्ष्मी नगर दिल्ली में है। और ये हमारा मतलब छोटा सा इनिशिएट है, 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो हमारा फूड का मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी दिन से हम लोग अंडर प्रिविलेज चाइल्ड को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जाके जो देखा, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं, मतलब जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, जो माइग्रेंट लेबर के बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, लेकिन उसका बेसिक एजुकेशन जो है उसमें बहुत से प्रॉब्लम है। मैंने हम लोगों ने बहुत सी कोशिश की उन लोगों को समझने की। पहले क्लास 4th 5th में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन नहीं है। जैसे सिंपल एडिशन, सिंपल लेटर उन लोगों को पता नहीं, बस कॉपी करना वो सीख गए हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन नहीं है। हेलो सर। हेलो जी हेलो, कंटिन्यू। तो बस सबके बातें सुनते हुए मैं इसी बात पे आपका मतलब अटेंशन बताना चाहती हूँ कि इस पे थोड़ा सा अगर आप लोग अब सभी बड़े स्कूल के टीचर है, प्रिंसिपल है, तो आप